गुड इवनिंग। वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में आप सबका स्वागत है। वणक्कम एंड सत श्री अकाल। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान बैक टू स्क्वायर वन विद जनरल राज शुक्ला, जो हमारे आर्मी कमांडर रह चुके हैं और आजकल वो मेंबर यूपीएससी है। जनरल राज शुक्ला, वेलकम टू गनर शॉट वंस अगेन। Thank you, sir. Good evening. Great pleasure to be back today. या टुडे इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने चुना है। 2 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले हम रोज इसके बारे में हम बात करते रहे। पाकिस्तान में क्या होगा, इमरान खान के अरेस्ट के बारे में क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। एक हफ्ता मैंने पाकिस्तान के ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं किया। अभी एक हफ्ते के बाद कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ हालात कुछ नजर आ रहा है कि कुछ हो रहा है। और नजर क्या आ रहा है? what is the big thing which is coming out of Pakistan? The big thing which is coming out of Pakistan, 1 year back, Pakistan was a hybrid democracy. 1 year later, Pakistan is now a hybrid dictatorship. Right? There's a change. Economics, we know, we'll talk of it. Right? But today हमने डॉन में एक आर्टिकल पढ़ा और ये आर्टिकल बहुत it moved something in me, and I thought, let me share it with all of you, and then let me share it with the Raj Shukla also, because this has a bearing on what Pakistan is going. एक कहानी है। कारगिल के युद्ध में एक कैप्टन था, कैप्टन कर्नल शेर खान। राइट? He died during Kargil operations. The Pakistanis did not take his body back. उसका बॉडी लाई गई श्रीनगर में। उसके जेब में एक चिट्ठी था उसका बहन का। उससे पता लगा कि ये कौन है आदमी, उसका नाम क्या है, और थ्रू बीबीसी इसके रिश्तेदारों को कांटेक्ट किया गया था और उसका बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए वो सेंट टू पाकिस्तान। एंड विद दैट इंडिया टोल्ड पाकिस्तान कि ये he was a man of bravery. He fought with valor, and he fought last man last round before he laid down his life for his country. Based on the Indian recommendation, Captain Karnal Sher Khan was awarded निशाने हैदर। और निशाने हैदर जो है हमारा पीवीसी जैसा है। उसके बाद उसका स्टैच्यू खड़ा गया, it was erected. And on May 9th, when Imran Khan was arrested, in the aftermath of those things, the mobs brought that statue down. Right? It's such a sad thing. But ये पाकिस्तान का कैरेक्टर को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? कि पाकिस्तान cannot recognize its heroes, nor can it preserve its heroes. On the other hand, it cannot recognize its villains, but preserves them. The people who have harmed Pakistan are being preserved by Pakistan. खैर, ये एक चीज है। पर कारगिल में वापस चलते हैं। अगर आप कारगिल में देखेंगे तो बहुत लोगों ने बताया कि पाकिस्तान went into Kargil. It was a brilliant tactical move, but horrendous strategic outcomes. It had no exit policy. After that, many people said Pakistan is a first half nation. It always plays the first half well and loses the second half. अब बांग्लादेश में भी यही हुआ है। राइट? और जहां तक इस सरकार की बात है, ये पाकिस्तान आर्मी ने जब ये हाइब्रिड सरकार लेके आए थे, सिंह सेम पेज सरकार, वो फर्स्ट हाफ अच्छा खेल लिया है, एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं था इनका। राइट? और असीम मुनीर साहब, ये भी एक हाइब्रिड डिक्टेटरशिप शुरू किया
कूद पड़े, क्या इनका एग्जिट स्ट्रेटजी है? और मेरा एक सवाल यही है जनरल राज शुक्ला से, और हमारा बातचीत इसी के ऊपर होगा। पाकिस्तान का एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होगा? इनके क्या ऑप्शंस हैं इसके आगे? हैव आई मेड इट too complicated, or have I put it in the right perspective, Raj, so you can move ahead? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा सर. If you look at Pakistan through this prism of, say, a football or hockey match with two halves, why Pakistan ends up losing and why it has lost the plot for 70 years is because it gets too caught up in the excitement of the match. और ये भूल जाता है, या उसके कुछ लोग भूल जाते हैं, that all games have rules. और वो जो नियम हैं उनका आदर करना बहुत जरूरी है. If you do not respect those rules, the game will end in a fiasco. You may at times show that you are winning, at times you may appear to be winning, but if you don't respect the rules, you will lose the match. And so the point that I wish to make is that if Pakistan wants to remain an aspirational democracy, and by all means it does seem to be wanted, or it does seem to be wanting to be a democracy, it must abide by the enabling principles, जिसको कहते हैं जमहूरियत के उसूल. Now, just see what is the biggest problem of Pakistan. That they cannot do a peaceful transfer of power, which is central to any democracy. And by the way, sir, I think this is also a challenge for, what shall I say, the world's oldest democracy like USA. We saw it in 2020. They still can't decide who won, whether it was the Republicans or the Democrats. There is dwindling political consensus. And I think that were it not for General Mark Milley, on that fateful, I think, January 6th, day of things would have been different. doing And to I might also- add Mark Pence also, who even the Vice vice President Mike, president, Mike Pence. Mike Pence. ये जो पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर है, ये बहुत जरूरी है. एंड पाकिस्तान somehow has not been able to get it right. And see, even when it came to Imran Khan, I think somebody put it very well in Pakistan, कि वो मकबूलियत को कबूलियत में तब्दील नहीं कर पाए. His substantive popularity, somewhere in the region of 65-70%, he could not convert it into legitimacy. And on this occasion, may I add, entirely on account of his own fatal mistake, and that was the events of 9th May. And therein lies a story. See, sir, today he is talking of muzakarat, talks. And whom does he want to talk with? Before 9th May, he was willing to exchange his great popularity for the appendages of power. He was wanting to talk to Asim Munir. And Asim Munir refused to talk to him. Till today, he's been using President Alvi to the good officers of President Alvi to get to talk to Asim Munir, and Asim Munir is not taking the calls of President Alvi. And when the opposition was offering talks to him, he turned them down with hubris. The lesson that the political actors in Pakistan have to learn is that they have to talk to each other. If they talk to each other through the army, Imran, Bhutto before him, and whoever succeeds Imran will meet the same fate. Because a true politician has to emerge from the rough and tumble of politics. It is beyond the army to foist a politician on the people. This hybrid regime business, I mean, they are petty dreams. They don't work. Nations are not created like this. Politicians, I'll give you an example. कोई आज कह रहा था कि इमरान में सब्र नहीं था. Look at the patience, say, of Mr. Vajpayee. A 13-day government, then a 13-month government, then a 5-year term, then I think
an interregnum of 2 terms, and then you come back to power. So there has to be patience. And here he was driven by this great September fever ki September se pehle, before Umar Bandial moves out, and there was some possibility linked to September of getting Faiz Hamid back, because that is the year he completes 1 year. So what Imran got caught up in was all kinds of pettiness, conspiratorial politics, all this kind of stuff. Whereas somebody who had his kind of popularity should have demonstrated statesmanship. Power Yeah. would have been his. 6 months down the line, 1 year down the line, वो नहीं कर पाए. And it's not only him. Politicians before him and politicians after him continue to make the same mistake. And that is why Pakistan every 15-20 years descends into this chaos. और जो आपने कहा कि फर्स्ट हाफ में स्कोर होता है 3-0, 4-0, and at the end of the game it is 4-7. Yeah, I think what they have lacked, I mean, this is my personal view, over years, is that they've lacked vision for the nation. I'll put it, in fact, I'll take it back to Jinnah himself. What is the vision for this nation, except being an Islamic state? Is never there, right? And whenever, whether it was Bhutto, or for that matter, Nawaz Sharif, or Benazir Bhutto, or Imran Khan, and whoever in between were there, none of the people, the civilian lot, had a vision for the nation. Like one important point जो आपने बताया, हर वक्त ये जितने राजनीतिक दल हैं पाकिस्तान के अंदर, they always dealt with each other through the army. कि इससे पहले दिन से इन्होंने आर्मी को बढ़ावा ना देना शुरू किया, तो देते 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 आज के दिन ये माना जाता है पाकिस्तान के अंदर कि द आर्मी इज द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी. अगर आर्मी बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, वो क्यों छोड़े? वो नहीं छोड़ेगा, राइट? और उसने अपना अभी पकड़ लिया सब कुछ. इमरान खान का पार्टी रिवाइव हो या ना हो, उसे कोई लेना देना नहीं. पीपीपी कड़े हो जाए या ना कड़े हो जाए, इससे कोई लेना देना है. पीटीआई चले, सॉरी पीएमएल चले या ना चले, नो प्रॉब्लम्स. टुडे the Pakistan Army is the biggest political party. इसीलिए मैंने बोला कि ये आसिफ मुनीर has become a hybrid dictator. देखने ही वाली बात यह है कि हाइब्रिड डिक्टेटर कैसे फंक्शन करेगा. अगर आपको याद है 10-15 दिन पहले, क्या आपने सोचा कि आसिफ मुनीर विल बी सो डिसाइसिव इन डिसमेंटलिंग पीटीआई? We didn't know about him, and he's done that. He's taken over. And जो भी हो रहा है पाकिस्तान में, उसके इशारे पे हो रहा है. 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद आप देख लीजिए, ये आर्मी ने पूरा, आपने जैसे बताया, ये दिल कंसोलिडेट पावर. उसके बाद पाकिस्तान का क्या आकार होगा? That is the $1 million question. And that is what I think we and let's say, what are the options do you think will emerge in the next, say, 2-3 months ahead? Before we come to the options for years ahead, or for the time ahead, मैं एक दो बातें कहना चाहता हूँ regarding please. Who are the villains of the piece? Not that I wish to come to the defense. नहीं, ठीक है, कोई नहीं. देखिए, पाकिस्तान में बड़ा सिंपल है. कोई विलन नहीं है, कोई हीरो नहीं है, सारे जोकर हैं, ठीक है ना? और ये they have this capability of switching from villain to hero overnight, and in between they play jokes on the nation. When I say joker, I mean it very seriously. All these chaps have played jokes on the nation. So if you say villains, that's okay. Tomorrow you can call them heroes. It doesn't matter. Yeah. मैं कहना ही चाहता था कि of course Pakistan Army is to blame in a major way, but the other villains that I was referring to are the politician and
the judiciary. So let's take the Yes. judiciary first. Yeah. Why not? And therefore, sir, I would like to underline this one thing, that politics can be very brutal, but they must be undergirded by lofty principles. If they are not undergirded by lofty principles, you will come to the sorry pass again and again. So let's take the judiciary. I think in 1956, Justice Munir, uh, in a very sophisticated manner and in a very inventive piece of judicial proposition, justifies Ayub's coup by saying that when a revolution succeeds, it in itself becomes a law creating fact, and therefore the coup is valid. Now look at the sophistication of those times. The judiciary was absolutely complicit in giving legality to a coup, which was a blatantly illegal act. अभी आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, what is पूरा खेल क्या है. Today it is quite evident कि the conspiracy जो थी उसमें जस्टिस सुमार बंडियाल भी शामिल थे. Yeah. He is going to be charge sheeted. If he doesn't resign, he will be charge sheeted the day he retires in September. It is amazing that the Chief Justice of Pakistan should be part of this conspiracy. And those leaks, of his mother-in-law. And look at it. अभी उसको ये पाकिस्तान में कहते हैं सास दमाद की politics. There is a leak of his mother-in-law, who's an Imran fan, trying to say, suggesting how all judgments will go in favor of Imran. In the Lahore High Court, there is a son-in-law, Damad, जो कि PTI government में था, and he was influencing all decisions of the Lahore High Court in favor of Imran. तो एक टाइम था कि आपने ये sophisticated judicial invention किया, और अभी आपने जिसे कहते हैं वो by the tenets of Patwari judiciary, you got into the rough and tumble of politics which you should stay away from. The concept of an apolitical army and a political judiciary, मतलब ये बड़ा विवेक का सवाल है. It is a matter of danishmandi, wisdom. If you don't and if you meddle in it, now see what happens. So it's like, just to add to what you're saying, Bandial was also instrumental earlier as a High Court judge in pushing Nawaz Sharif out. He played with the army then. And exactly. Just to add to what you're saying, the history of Pakistan, the judiciary has played a second fiddle in every major change of power. It played a second fiddle in Ziaul Haq, ascent, change of constitution, new constitution, everything. It underwrote whatever he did. It helped Parvez Musharraf come to power. It also helped in kicking him out of power. If you remember when Iftikhar Chaudhry and the lawyers protest, right? They played their hand. In fact, if you see, they played their hand both ways. In this, what you're saying is, there is more than normal hand. Like you say, I go with you. There's a conspiratorial story behind this entire story of this thing. And of course, the fact that the judiciary is split vertically down the middle is absolutely clear. Right? Exactly. So the point I was making was that the judiciary is also a villain in the whole. Yeah. And the other critical issue, sir, is that whenever nations are in crisis, you need neutral arbiters. अब वो neutral arbiter army नहीं है, because वो सियासत में it's involved in politics. The judiciary is of course not there because it doesn't enjoy credibility. It doesn't enjoy credibility. हिंदी में बात कर लीजिए, because a lot of people want हिंदी. वो उसमें विश्वसनीयता नहीं है judiciary के. और जो तीसरा किरदार है वो पॉलिटिशियन का है. अब देखिए, जो पुराने पॉलिटिशियंस हैं जैसे नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो, उन्होंने जो भी गलतियां की हों, बट दे हैव मैच्योर्ड. जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था बेनजीर और नवाज शरीफ ने, उसमें दे रियलाइज्ड कि भाई आपस में अगर वो बात नहीं करेंगे तो हमेशा आर्मी के दे विल बी एट द मर्सी ऑफ द आर्मी. When Benazir passed away, जब Nawaz went to pay his last respects, he shed tears.
So people say that if Nawaz and Benazir had lived on, शायद ये मसला दोबारा नहीं आता. But here comes a rookie politician, handsome man, cricketing star, और इसको फौज ले आती है अंदर. और Imran, see what is most disappointing about Imran is that he showed great cricketing acumen. He was very popular, but he showed zero political wisdom. मतलब बेवकूफी की मिसाल है जो 9th May को हुई है. And now it is very evident that it was a pre-planned conspiracy. अब उसमें जो आपने चलिए कोर कमांडर का घर कर दिया, what you brought out, desecration of martyrs memorials, I mean stupidity of the highest order. उनकी मकबूलियत जो 70% थी, मैंने कहीं पढ़ा कि कल सर्वे हुआ 80% लोग ये समझते हैं कि इमरान इसमें मुलव्विस है, और 60% कहते हैं कि इनकी अभी सजा आर्मी कोर्ट से होनी चाहिए, आर्मी कोर्ट से होनी चाहिए. So look how he has lost the plot by sheer stupidity, and because जिसे कहते हैं वो राजनीतिक विवेक, political sagacity, उनमें बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल नहीं दिखाया. So while of course मेरा ये कहना है army is the villain of the piece, politician and especially when you have shallow characters like Imran Khan, बिल्कुल दानिश कोई डेप्थ नहीं थी, ये तो होना ही था. और जो ये प्रोजेक्ट इमरान खान है, now this is interesting. ये you know sir, I go to a lot of these YouTube channels in Pakistan. Yeah. There is one group which calls themselves Patwari YouTubers. Means they distinguish themselves from the hoi polloi जो Friday Times में लिखते हैं और Dawn में लिखते हैं, but they say that our wisdom is greater. तो ये मैं जो दे रहा हूँ, नहीं, ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम है कि every chap thinks he is wiser than the other guy. Right, that's one of the some of the facts, because I've been watching a few of them over a period of time, and some of the ones whom I think are credible. जैसे नजम सेठी ने, he wrote the last editorial for Friday Times before he moved to the Pakistan Cricket Board in December, and he wrote in December that Imran is done because he was displaying such stupidity time and again. And he thought he could demagogue his way out of politics. Like he would tell his people कि कलिमा पढ़ के आप बेखौफ हो जाएंगे. I mean, absolutely stupid stuff. The project Imran Khan is interesting. जो उसको लाडला बोलते हैं, I mean, he was, given this special status. This status given to him was far more than accorded to Nawaz Sharif or Bhutto. Yeah. ये जो लोग कंपेयर करते हैं कि भाई नवाज को भी फौज लाई थी, भुट्टो साहब also was a मंत्री थे अयूब के कैबिनेट में. These are false equivalences. Imran had a different status. मैंने तो सुना है कि क्रिकेट में उसको लाने के लिए आसिफ मसूद को निकाला. If you recall, sir, आसिफ मसूद was a fast bowler. Imran was brought in, and then ये जो पाकिस्तानी मिडिल क्लास है, मैंने सुना इसमें दो तबके हैं. एक तबका वो है जो जिया का तबका था, which was economically prosperous, but also उसमें ये मजहब था, बड़ी संख्या में मजहब था, religious piety. That was the Zia constituency which Nawaz inherited. अभी ये पाक आर्मी ने क्या किया, जो दूसरा जो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूंसी थी, थोड़ी सी लिबरल, जो मुशर्रफ साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वो इन्होंने डाली इमरान के दामन में. और इमरान की ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वो it was largely army families, what are called इमरानदार generals, इमरानदार judges. और भाई ये सोचा गया कि ये तो he is one of us, we are part of them, and this will rule, and this will push out Nawaz and and plus he also had this thing of Taliban Khan. He had also become born again Muslim. बिल्कुल. अभी इमरान की जो सेक्युलर छवि थी, इसको बदला गया. एक कोई वीडियो लीक हुआ था, उसमें इमरान इज बीइंग टोल्ड बाय वन ऑफ हिज एड्स कि सर थोड़ा मजहबी लहजे में बोलिए. आई मीन पुट ऑन दिस रिलीजियस एक्ट, एंड देन ऑल दिस रियासत मदीना एंड ऑल केम. बट सर, आप you listen to the Pak Awam, they are also not fools. They see through all this. And so what happens in 2014, he does a rehearsal of this. वो जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ, पीएम हाउस में हमला हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे हमला हुआ, तो जितने भी सिविलियन सिंबल्स ऑफ पावर थे उसको उन्होंने मारा. एंड ही
This is how his hubris grew. और सालों से he was brought up by people like Hamid Gul, Majibur Rahman, Kayani, Rahil Sharif, so on and so forth. And now we all know that in the elections he didn't have a clear majority. इसलिए उनका नाम selected prime minister था. He was riding the shoulders of the army. अब सर इसमें आई डोंट नो आप मुझसे इत्तेफाक करते हैं कि नहीं, इसमें गड़बड़ एक ये हुई जो एक आई डोंट थिंक इट वाज अ इंटेंशनल मिस्टेक बट ये हुई. When Asif Munir was DG ISI, Asif Munir Saab went and Asif Munir, for all his faults, is known as or seen to be a ramrod state general in certain ways. So he went to Imran and he said, "Sir, आपके PM house में corruption हो रही है," and he cast some aspersions on Bushra, his wife. And he was thrown out. In a fit of anger, he was thrown out. Yes. And Imran, when things were going his way, he thought it is very simple. Faiz Hamid आएगा, मेरा आदमी होगा, वहाँ उमर बंडियाल होगा, Faiz Hamid, Umar Bandial, and he was wary of Justice Faiz Isa. Justice Faiz Isa is a constitutional judge who is likely to succeed Umar Bandial. अभी when he was thrown out of parliament, मुश्किल ये हो गई कि उमर बंडियाल सितंबर में रिटायर हो गए. एंड उसने देखा आसिम मुनीर भी मेरे बरखिलाफ, उमर बंडियाल भी बरखिलाफ, तो सितंबर से पहले इलेक्शंस करवाने हैं. बंडियाल को आई मस्ट कम टू पावर सो दैट बंडियाल कैन बी कंटिन्यूड एंड इफ पॉसिबल फैज हमीद बी ब्रॉट बैक. अब ये जल्दी थी सितंबर की, और जब ये जल्दी थी सितंबर में, ही वाज टोल्ड बाय एवरीबॉडी. द अदर थिंग इज व्हेन जब आप पावरफुल हो जाते हैं तो ये जो चमचों की बारात है, इको चेंबर, everybody told him, sir, उनकी तो हिम्मत नहीं है आपको अरेस्ट करने के लिए. इमरान खान रेड लाइन, अगेन ह्यूमरिस, कि अगर आप इमरान खान को अरेस्ट करेंगे तो साहब पाकिस्तान तबाह हो जाएगा. And it is based on this hubris that he made this very stupid plan of 9th May. And what was worse in my view, 10 मई को या 11 मई को जब उन्होंने कोर्ट के अंदर से आसिम मुनीर को डायरेक्ट चैलेंज किया, and he said कि भाई there is one man, Asim Munir. And I think that Asim Munir, he got Asim Munir on his wrong side. Of course, the present government is in any case on his wrong side. Umar Bandial was put in place by the crowd of Faizul Rahman, and that got things वो जो उसकी वजह से ये जो है ये हालत पूरा प्रोजेक्ट इमरान खान 27 साल का प्रोजेक्ट एक दिन 9th मई की गलतियों की वजह से खत्म हो गया. अब तो ये खत्म ही है मेरी तरफ से. बट अब देखिए दृश्य क्या निकल रहा है. दृश्य ये निकल रहा है कि एक गवर्नमेंट है जो बिल्कुल फौज के ऊपर निर्भर है. एक फौज है जिसने कब्जा तो ले लिया, पर उसका क्या राय होगा और उसको क्या दिशा होगा किसी को नहीं पता. और ये जो एक ऑपोजिशन है वो बिल्कुल खत्म हो गया, पर न्यूसेंस वैल्यू होने के लिए जगह है उसके लिए. वो इलेक्शन जीत नहीं सकता, पर न्यूसेंस वैल्यू करने के लिए उसके पास मेरे ख्याल में क्षमता है. अगर क्षमता नहीं है तो वो कुछ दिन तक ये इंस्टेबिलिटी रहेगा. और उसके साथ साथ ये भी सवाल उठ रहा है अभी आज के दिन पाकिस्तान में कि भाई जब इमरान खान था, जो भी था, उस वक्त पाकिस्तान का ग्रोथ जो है ना 5-6%, 2-3-4% हो रहा था. ये जो प्रोजेक्ट इमरान खत्म करने के बाद 1 साल के अंदर ये तो इस गवर्नमेंट के साथ और भी पीछे चला गया. और इस हालत में इनके पास जहां ये IMF इनको पैसा नहीं दे रहा है, और इनका किरदार जितने भी इनको डेट दे रहे हैं वो तो आई मीन दे आर गोइंग टू स्टार्ट बेइंग. डिफॉल्ट नजदीक आ रहा है, रोज के रोज टेररिस्ट इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं. 2 साल या 3 साल के अंदर इनका पानी का किल्लत इतना बड़ा होने वाला है. आई हैव डन रिसर्च ऑन दिस. By 2025, Pakistan is going to be an absolute water scarce state. जिस दिन वो हो जाएगा, इनका एग्रीकल्चर भी टफ हो जाएगा. और एग्रीकल्चरली आज के दिन भी they have switched in the past 4 to 5 years from being a agricultural export nation कि वो आज के दिन
खाने के सामग्री इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके पास के लिए भी पैसा नहीं है। और आप हम सबको पता है कि महंगाई कितना हो रहा है। तो इस हालत में आप पाकिस्तान को आगे बढ़ते हुए कैसे देखते हो? बिकॉज दैट्स द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। और where do you think, what are the options do you think will emerge, or how it will go, which pathways it can adopt? पाकिस्तान का तो बुरा हाल है। आपने सही कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ 0.5%, कोई तो कहते हैं कि टेक्निकल डिफॉल्ट शायद ना हुआ हो, बट बाजारों में लोगों ने कर्जा देना बंद कर दिया, सो डी फैक्टो डिफॉल्ट हैज हैपेंड। और आई मीन सर, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉकरी है, सोसाइटल एम्प्टीनेस देख लीजिए आप उन लोगों की। एक बार सोचिए, ये जो व्हाट दे कॉल द यूथिया ब्रिगेड, these people from 18 to 25 who invested in Imran Khan, they are disillusioned for the next 10, 20 years. 20 years. So that means actually what you're saying is a very important thing. The youth of the Pakistan, apart from being, उनके पास क्या नौकरी तो है ही नहीं और डिsillusion भी है, तो इसका हालत क्या होगा आगे? पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। और आप ये भी देखिए, जो पाकिस्तानीज जो बाहर से रेमिटेंसेस भेजते हैं, I have heard Shuja Nawaz saying it कि it's going to dip by $15 billion this year. तो जहां तक इकोनॉमिक पतन का सवाल है, मतलब the less said the better. They are in a deep abyss. अब politically क्या हो सकता है? Politically मेरे समझ में let's see Imran's future. Though I think he's done, you also say he's done, but बहुत लोग हैं पाकिस्तान, बहुत तो नहीं, बट कुछ एक तबका है पाकिस्तान में जो कहता है कि भाई he will fight back and come back. See, आज मैंने very unlikely, but just एक मिनट, let's discuss this. हसन निसार कहते हैं, he's another commentator in Pakistan. He says कि अगर आपने इमरान को जेल में डाला तो वो मंडेला बन के निकलेगा। Yes. अगर उसको आपने एग्जाइल किया तो वो खोमेनी बन के वापस आए। तो I doubt. I think no, but he's got nuisance value. Yeah, he's got nuisance value, but या तो इसको खत्म कर देंगे अभी से। नहीं, it is either or survivor. आसिम मुनीर ने अगर इसको खत्म नहीं किया तो आसिम मुनीर खत्म हो जाएगा। ये मैंने आज शाम को ये केपीके राइट के जो पीटीआई का इंचार्ज है, सईद मुर्जा या कुछ है उसका नाम, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा मैंने, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना आज शाम को, जब वो आपसे बात कर रहा था शाम को, उस वक्त मैं ये सुनता आ रहा। वो बहुत सवाल पूछ रहा है, ऐसी बात नहीं है कि पीटीआई बिल्कुल बैठ गया। हम सोचते हैं क्योंकि उनके बड़े लीडर चले गए तो ये पीटीआई खत्म हो गया, ऐसी बात नहीं है। सपोर्ट है, शायद ना जीते पूरा पाकिस्तान को, पर उसके पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस है। खैबर पख्तूनवा में इसका इन्फ्लुएंस आज तक है। अगर वो खैबर पख्तूनवा में इन्फ्लुएंस है और वो इन्फ्लुएंस अगर नेगेटिव हो गया, फिर पाकिस्तान के लिए बहुत प्रॉब्लम है। जो आपने बात किया वो इनफैक्ट इट्स वेरी लॉजिकल। सो ही इज नॉट अ फिनिश्ड केस, ही इज नॉट अ स्पेंट केस दैट यू कैन इग्नोर हिम। ही इज नॉट समथिंग, जैसे आपने बताया कि ही कैन नॉट बी पुट इन जेल सो दैट ही कम्स आउट एज अ मंडेला। सो यू सी एन assassination. I mean, that's the one of the possibilities politically. बट जब पीटीआई को डिस्कस करते हैं सर, तो ताज्जुब की बात जो ये उभर के आती है कि पीटीआई हैज प्रूव्ड टू बी सच अ डेंटी पार्टी। उनको गर्मी लग रही है अडियाला के जेलों में, और लुक एट द अरेस्ट्स। आई मीन व्हाट इमरान डिड टू मरियम नवाज। Yeah, that is known. I mean, the party is useless, is proven, and the party will. Yeah. My point is this, that an artificial party which has not come through the rough and tumble of politics, the king's party, will always dismantle like this. Yeah, it is not capable of surviving a crisis. See, अब साहब कहते हैं कि Imran will revive it. Even if Imran revives it, a man of his wisdom will plunge it into abyss again. He has come out as a complete fool. So what you're saying is that irrespective of what happens, even whether Imran continues or not, he'll keep Pakistan in turmoil unless he's assassinated.
तो मेरे को पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं दिखता है. Yeah, I also agree. I mean, there's no future of Pakistan, So PTI in Pakistan to be a force of to rule or shape Pakistan or take it कि भाई वो पाकिस्तान को सुधारो. वैसे भी ये इमरान के पास कोई प्लान नहीं था. अभी देखिए, अगर मान लीजिए आप 2 महीने पहले 3 महीने पहले अगर आपके इसके स्पीच सुनते तो उसमें बड़ा साफ जाहिर था इसके पास कोई इकोनॉमिक प्लान ही नहीं था. और इसके बारे में मैंने जनरल सतीश दुआ के साथ एक दिन सूफी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है, दूसरे दिन स्कीइंग कैपिटल की बात कर रहा है. वो सब कोई जमीनी उससे या इट वाज नॉट देयर. जो पॉलिटिकल स्पेस है, लेट्स डिस्कस दैट फॉर अ मोमेंट. या पॉलिटिकल स्पेस है, आई थिंक. अच्छा सर, आजकल इमरान हैज प्रूव्ड टू बी सच अ पॉलिटिकल ड्वार्फ कि लोग आसिफ जरदारी की तारीफ कर रहे हैं. या वो कहते हैं he was politically savvy, he had politics, he understands politics. तो आसिफ जरदारी की याद आ रही है लोगों को in terms of politics. That's what they have. So I think the army will stay out of politics. They will keep doing this backseat driving. और जो main political parties हैं, they will be the PPP and the PMLN. और जो ये PTI ने जगह खाली की है, इसमें जहांगीर तरीन की बात हो रही है. somebody like जहांगीर तरीन, वो क्या होगा उसका. हाँ, तो ये जो 3 political parties हैं, they will, I think, come back and they will still be elections, and hopefully at some time in the future Pakistan will understand the value of peaceful transfer of power, get its politics going. Unless its politics gets going and its civil military relationships stabilizes, Pakistan will never get economic prosperity. I think आपने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है कि जब तक इनका सिविल मिलिट्री रिफॉर्म नहीं होता, नॉट इवन इक्वेशन, रिफॉर्म चाहिए, राइट. ये पाकिस्तान विल नेवर स्टेबलाइज, नेवर गेट रिवाइव इट्स इकोनॉमी. और ये रिफॉर्म के लिए इनको पॉलिटिशियंस ऑफ कैलिबर चाहिए. और मेरे को तो जितने मैंने इनका यूट्यूब चैनल्स देखा है, इनका मीडिया पढ़ा है, इनके सब कुछ देखा है, कोई ऐसे एक पॉलिटिशियन भी मेरे को नहीं दिख रहा है who has the capability and the vision to take Pakistan to some kind of a working democracy also. Forget about taking over, sidelining the army. अब ये जो आपने बात की, this is very important कि इन चीजों की आपको you should have an understanding. अभी देखिए, today इमरान is complaining कि भाई media is not speaking, देखिए क्या human rights violation हो रहे हैं. In his time, he destroyed all these institutions of democratic value. The Dawn, he targeted newspapers like the Dawn, organizations like the Aurat March, the PTM. ये जो institutions थे, ये उस समय इमरान के खिलाफ बोलते, पर आज इमरान के पक्ष में बोलते, पर आपने इनको गायब कर दिया. Look at the value of the presidency, sir. In times of crisis like this, institutions like the presidency emerge as credible, neutral arbiters. अभी आपने अपना आदमी वहां बैठा रखा है, अलवी. Nobody trusts him. So ये जो बातें हैं, ये समझनी पड़ेगी. One word about the Pakistan army, because that is also critical. There was a very famous saying है सर, जनरल आसिफ नवाज की. He was once asked by a journalist कि भाई आप इमरान के वो नवाज के आदमी हैं, जब वो नवाज was the prime minister. He said, listen, when 500,000 troops move at the point of your finger, you are nobody's man but that of the Pak army and your own conscience. अब मैं इस पे बात करना चाहता हूँ. The Pakistan army has to revisit its institutional conscience. If it revisits its institutional conscience, it will realize that the power that it has must be modified. ये जो बात करते हैं ना, the guardians of the ideological and territorial frontiers, they can only guard the territorial frontiers. They cannot guard the ideological frontiers. It is hubris for any army to think so. And
they must abide by a telling principle of civil-military relations, which is this, sir, that a civilian is right, political principle, not the bureaucrat, political principle. The civilian is right even when he is wrong. I The agree. civilian has a right to be wrong. Salute and obey. जब तक इन्होंने And the military, इस असूल I'll add one more thing to what you have said. It is not only that the civilian is right even when he is wrong, the military is wrong even if it thinks it is right in a democracy. That is and something this which does they have to not accept. curb the military's power. It It just enhance, ensures institutional balance. yes, It ensures institutional balance. balance. Yeah, I So agree with I you. think this is central to settling this But descent into chaos in Pakistan. ये क्या ये पाकिस्तान आर्मी के अंदर ये सोच है? आपको अब कहीं बड़ा नजर आ मुश्किल रहा है है? सर. It needs one Asif Nawaz or somebody like that. दिखते नहीं है सर, बट 23 करोड़ में 100 तो अच्छे आदमी निकलेंगे. देखिए, क्योंकि देखिए बात यह है कि ये जो असीम मुनीर है, ये ही इज अननोन फैक्टर. जैसे मैंने बताया, ये अननोन फैक्टर है. एक तरीके से देखिए तो ही हैज डिस्प्लेड एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑफ थॉट इन डिसमेंटलिंग इमरान. कि उसने इमरान खान को ओवरनाइट नंगा कर दिया और ही इज पुट हिम ऑन द स्ट्रीट, रास्ते पे लेके आ गया. राइट. पीटीआई एज अ पॉलिटिकल फोर्स टू अपोज पाकिस्तान और पीएमएलएन, वो जो भी गवर्नमेंट है, इज फिनिश्ड ऑलमोस्ट, और ऐसे ही रहेगा. ओके. बट इक्वली जब ये सियालकोट गया था, ये गाली गलौज में निकल आया पब्लिकली, एंड उस वक्त ये नजर आ रहा था कि ये काफी इम्बैलेंस था. ठीक. तो इसका जो पर्सनालिटी जो नजर आ रहा है, आया है अभी तक पब्लिक डिस्प्ले पे, इट इज वन ऑफ ड्यूअल पर्सनालिटी. राइट. ये मेरा अंदाजा है. इसमें हाँ या सर, या प्लीज गो अहेड, विल टॉक. या यू गो अहेड. इसमें मैं दो चीजें याद आई. One is, I don't think Asif Munir really sorted out Imran. Imran sorted out himself. That's okay. That's a different story. एक मजेदार बात है, कोई सुना रहा था ये मुनीर न्याजी का कपलेट, which says कि in regard to Imran, he says कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम थे. The politics was of course brutal. कुछ मनु मरंदा शौक भी सी. I mean, I was resolved to commit political suicide, so he killed himself. But the other point you make, sir, about Asim Munir, and see, this is the point. Look, if Asim Munir is what you are saying he is, मैंने भी सुना कुछ सियालकोट में, he made some very indiscreet remarks. Look at the other option, Faiz Hamid, वो भी contender थे chief के लिए. That man was complicit in May 9th. He's under house arrest. He's going to be charge sheeted. Yes. Can you think of any 3-star who will think in these stupid terms of conspiring within and breaking the Pak army? तो अगर ये पाकिस्तान की हाई डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप है, तो भगवान बचाए पाकिस्तान को. I mean, if this is the crop of generals that they are producing. देखिए, बात ये है कि यही है. और just one quick point, sir, in Asim Munir's favor. In prosecuting the conspirators of 9th May, he is showing no difference between civilians and those from the army. For example, आपने सुना होगा सर, वो शतीजा खान, granddaughter of Asif Nawaz, उसको नहीं छोड़ रहे. आज मैंने सुना परवेज इलाही भी अरेस्ट हो रहे हैं. Now, if he ensures that justice is equally dispensed across the civil and military segments, he may perhaps arise. And from there, he could get a credible position from where he could shape the Pakistani state. Right. So, जो दृश्य निकल आ रहा है पाकिस्तान के बारे में, वो ये है कि पाकिस्तान क्या है कि अनस्टेबल रहेगा. इसमें दो राय नहीं है. इसका इकोनॉमी रिवाइव नहीं होगा. बात ये है कि अगले, और ये इलेक्शन सितंबर अक्टूबर से पहले होने से रहा, और ये वेट करेंगे जब ये चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएगा. तब तक हो सकता है इलेक्शन भी ना हो.
किसी और इसके जरिए इमरजेंसी या कुछ जरिए, क्योंकि तब तक ये अलवी को भी निकाल देंगे किसी तरीके से, वैसे भी उसका भी टर्म खत्म हो रहा है। और या वो तब पूरा डिस्पेंसेशन जब नया होगा, हो सकता है इलेक्शन ही ना होल्ड करें कुछ दिन तक, क्योंकि इकोनॉमिक इमरजेंसी या कुछ डिक्लेयर कर देंगे। तो इस हालत में ओवरऑल इनका जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो आगे तो नहीं जाएंगे, ये पीछे ही जाते रहेंगे, और इनका इंटरनेशनल आइसोलेशन वगैरह बढ़ता जाएगा, और 4 महीने के बाद इनका जो हालत है, लोगों का हालत है, वो बिगड़ता जाएगा। ये हम सियासत और पॉलिटिक्स और पावर और गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, लोगों का क्या हालत है? वो महंगाई में दे आर स्टक इन अ बैड शेप। पॉवर्टी 1/3 ऑफ पाकिस्तान गुर्बत के हालत में है। और मैं ये इन्होंने कुछ फ्री राइस और बीट वगैरह बांटा था पिछले महीने, उस वक्त मैंने बोला यू कैन distribution of food grain is temporary, but poverty is permanent. And Pakistan has reached that state of permanency for 1/3 of its population. 1/3 of its population is, at the end of the day, 80 million people. We could be looking at a human catastrophe or a humanitarian disaster situation. Or that could even probably lead to some kind of anarchy. I don't know. I mean, I'd like to have your words on that and views on that, and then we'll take on some questions. So, I mean, in strategic terms, how I look at it is like this. कि सर इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली, सोशली और बड़े जो मापदंड हैं उसमें तो उसकी बुरी हालत है, गुर्बत वगैरह जो आपने बताया उसकी बुरी हालत है। और जो जैसे मैंने कहा, दिस कॉन्स्टिट्यूशनल मॉकरी, सोसाइटल disillusionment, rule of law, this is the ripe cocktail for a failed state. In fact, the right way to describe Pakistan is a failed state and a disillusioned society. Uske society mein koi aspiration bache nahi. I think you made a very important point, a failed state and a disillusioned society. That's, I think, a very telling comment. But now, so when I look at it from India's viewpoint is this, that see, China got a reprieve because USA was entangled in Iraq and Afghanistan. This God-sent reprieve to us should strengthen our focus to the north. North. Yeah, I think you made the central point. Let's not mistake, or let's distinguish between the pest and the threat. Pakistan is a pest in the overall scheme of things. Pakistanis may not like it. Yeah. Somebody said GDP जो है Bombay Stock Exchange से भी कम है, तो हम उस पे क्या time waste कर रहे हैं? China. Having said that, sir, I want to just make one point. What we should worry is कि if Pakistan also becomes an ungoverned state like Afghanistan, and if these ungoverned spaces grow, increase, there is every possibility of terror coalescing and some kind of 9/11 happening from the West. But what is a deeper worry when I look, जब मैं Western horizons की तरफ देखता हूँ, देखिए सर, ये जो नई emerging axis है, पाकिस्तान, तालिबान, ईरान, Turkey, it is as much of a threat which is inimical as China. So Pakistan की तो हालत बुरी है, but beyond Pakistan, इर्द गिर्द जो हो रहा है वेस्टर्न होराइजन्स में, वो भी प्रॉब्लम है। और द बिगर प्रॉब्लम जो हमारी जो एकदम ग्रैंड स्ट्रेटेजिक चैलेंज है चाइना के साथ, वो ये है सर कि LAC में देयर इज अ इशू इवन बियॉन्ड पाकिस्तान की हमने बात की, बट if we are stuck to these continental concerns, we are running out of time. We have to make a turn to the seas. अगर आज हमने we don't make a turn to the seas, 10-15 साल बाद we'll be enveloped from the north and the maritime dimension. Yeah, I think आपने जो बोला है बिल्कुल take great pleasure in what is happening in Pakistan, rightfully so. नहीं, it should
It should spur us to look at these larger issues. या आपने जो बोला है एक बहुत सही पॉइंट बोला है, वो ये है जो भी पाकिस्तान में हो रहा है अभी, ये उतना जल्दी ये स्टेबलाइज नहीं होगा, और डिस्टेबलाइज होके अगर लार्जर थ्रेट बनना है उसके लिए टाइम है। ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, और दिस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए हमारा नजर और पूरा विजन और पूरा शक्ति एंड एंटायर एफर्ट, नेशनल एफर्ट शुड बी ऑन चाइना। चाइना का मतलब ये नहीं है कि नॉर्दर्न बॉर्डर ही है। नॉर्दर्न बॉर्डर आज मेरे हिसाब से is at a place where we can control the northern border. We can hold the northern border and handle whatever China can throw at us. And China can't throw much because China has its own problems. उसका खुद का प्रॉब्लम है। और ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ये है कि हम मैरिटाइम डोमेन, स्पेशली द इंडियन ओशन, वी emerge as the true net security provider here. When जब चाइना ने अपना पांव अभी तक यहां रखा नहीं, ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि चाइना को स्टेबलाइज होके दोबारा उभर के आने के लिए 5-6 साल लगेगा, और उस 5-6 साल के अंदर उनका घटती आबादी वगैरह वगैरह के साथ टाइम है। मेरे ख्याल में दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास 5 से 7 साल है, वेयर we have to get our act together. सवाल ये है कि क्या हम ये कर रहे हैं कि नहीं, और इस सवाल का जवाब हम किसी और दिन बात करेंगे कि इस 5 से 7 साल के अंदर हमने क्या करना है और किस तरीके से बढ़ना है। विल टेक इट ऑन। आई विल टेक सम क्वेश्चंस। एक छोटी सी मैं बात कहना चाहता हूँ। पाकिस्तान is in a civil military crisis. We have sorted out our civil military relationship, but if we have to narrow the lag with China, we have to fuse our civil military capacities. Yeah, we'll talk of civil military fusion. We have to, if you talk in civil military terms, Pakistan to tabah ho raha hai, it has to sort out the basics. Yeah. We have reached the midway point. We have now to finesse it in terms of civil military fusion if we are to narrow the lag with China. Yeah. I agree with you. We'll take some questions, and there are a lot, but first and foremost, KU, thanks a lot, right? Then again, KU, thanks a lot once again. Sri Harsha Lokinedi, Viladu, आपको ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। I'll request, please translate and put this question up again. हम आंसर करेंगे आपका जरूर, right? Because not everyone understands Telugu. Sir, in my honest opinion, Pakistan has reached the limit how much it can be a threat to India. They have been hit so badly, they can no longer threaten India the way they used to in 80s and 90s. They cannot even fix their economy anymore. Yeah. Raj. So I agree with Ishan that I said that Pakistan is the pest and China is the threat. But ek cheez mein I want to say one thing here to Ishan. Let's see what the problem in this. How does Sino-Pak collusion manifest? Whenever India has started looking seriously at China, Pakistan has interrupted that gaze. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. Somewhere in the time horizon of 2611, we were thinking after exercise Divine Matrix very solidly to focus on China. But 2611 happened. 2611 happened, so it delayed our pivot towards China. You see all these crises, जब डोकलम होता है, उसके बाद पुलवामा हो जाता है. So whenever we are looking at China in a serious manner, Pakistan poses these distractions, either independently or by design. And if I know the Chinese well, it could well be by design. कि जब वहाँ कुछ हो रहा हो, इधर कुछ कर दो. So Pakistan is that distraction which prevents India from single-mindedly focusing on China. But it will be a challenge for Indian statecraft to look at China resolutely
while taking care of this pest Pakistan. It is possible, but it will need a lot of finessing and fine tuning. Right. Vishwanathan asks, sir, will the Pakistani army risk people's wrath by taking over power as they will be held accountable for forthcoming economic woes? Yeah, go ahead. देखिए ये बहुत बढ़िया सवाल है. One of General Bajwa's biggest problem was Imran was कि he used to say, sir, हम आपको लाए हैं power में, at least govern well. When you are not governing, for example, that Usman Buzdar, a known incompetent person, corrupt to the core, brought on the recommendations of Bushra Bibi and creating problems in Punjab every day. By the way, that was the first reason or the first one of the first early drivers which caused a split between Bajwa and Imran. So hua kya? Because of Imran's absolutely poor delivery, administrative abilities, the flak was being borne by the army. कि भाई आर्मी बोलते थे साहब आप लाए इसको पावर में and now you are the cause. So that is one point. The second point is I'm sure the Pak army has got the wisdom that the days of imposing martial law, holding power directly are over. It is stupid. Backseat driving, of course, they will do, but backseat driving ke liye, they need somebody whom they can hoist. अब वो उन्होंने इतना बढ़िया क्या कहते हैं जेवर निकाला इमरान, 27 साल उसकी ट्रेनिंग की और वो इतना खोखला निकला, इतना बेवकूफ. So this is a problem that they cannot find the right guy to rule the nation on their behalf. So it will continue to be a challenge. और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अल्टीमेटली पाक आर्मी मस्ट रियलाइज कि भाई आपका पावर रहेगा बट आपको सियासत से दूर होना पड़ेगा. अब वो दानिशमंदी उनमें आती है कि नहीं, विल दे गेट दैट विजडम is a matter of conjecture. I don't see it happening in the near future, but that seems to be the only way forward for Pakistan. Yeah, I am with you. I'll right. Okay. ये एक सवाल नहीं. There's a request. I'll take it on. I request you to please emphasize on China issues as Pakistan doesn't seem to be a potent adversary anymore, at least for a decade or so. I completely agree with your sentiment. All of us agree. और मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमने ये चाइना चैलेंज सीरीज शुरू किया. इनफैक्ट जनरल राज शुक्ला एंड आई स्टार्टेड दैट सीरीज अबाउट 15-20 डेज बैक. जब पाकिस्तान में वाकया हुआ था हमने उसको थोड़ा स्थगित किया और ये अभी एक्चुअली मैंने दोबारा ये चाइना चैलेंज सीरीज शुरू कर दिया. पर इसमें प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है हमें ऑडियंस नहीं मिलते. आप लोग नहीं आते हो देखने के लिए. मैं लेके आता हूं सबको बात करके, सबसे बढ़िया लोग जो चाइना को जानते हैं, जो चाइना के बारे में पढ़ते हैं और चाइना के बारे में जानकारी है, मैं आके उनके साथ बात करता हूं. मेरे पास कोई ऑडियंस ही नहीं होता. और ये बात मैंने कल जयपुर डायलॉग्स में भी बताया कि भाई जब तक आप लोग नहीं आओगे हम कहां जाएंगे. हमें किसके साथ बोलना है. We need people who see us and hear us and ask questions, right? On popular request, I did a program on dams on Brahmaputra. After 2 days, no, don't even get 1,000 views. But अगर आप किसी और चीज के बारे में आप बात करो तो किसी चैनल में जाके आप देखिए 1 लाख व्यू हो जाता है. So we will do. बट आई नीड मोर व्यूज. उसके लिए आपको इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करना पड़ेगा और ये लाइव शोज में आना पड़ेगा या देखना पड़ेगा, या यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ टू नो अबाउट चाइना. हमारे पास जो ज्ञान है हम देंगे. और जैसे हम बार बार बताते आ रहे हैं, ये एक आर्मी कमांडर साहब हैं जिन्होंने चाइना के बारे में बहुत ध्यान से पढ़ा और ही वाज रिस्पॉन्सिबल. ओके, I have been a DGRT. I know what capabilities I have developed for against China and why. हमारा बड़ा क्या बोलते हैं उसको थ्रेट चाइना है.
ये मिलिट्री थ्रेट ही नहीं है, स्ट्रेटेजिक थ्रेट है, नेशनल थ्रेट है, राइट। पर ये बात हमारे जो जनता है, आप लोग को समझना चाहिए, और वो थ्रेट किस तरीके से हमारे ओवर आ रहा है आपको समझना चाहिए। हम तो करेंगे, डोंट यू वरी ऑन दैट। ओके, राइट, ओके। But gaming, India gives Pakistan too much attention, like Uri surgical strike, Balakot, and other actions. If India gives the same treatment to China or something, the Tibet card is tempting. Yeah, have a take on this. No, listen, let's not undermine these surgical strikes and the other issues. मैं आपको देखिए बताता हूँ what. You have to take them back a little and see what was the Pakistan threat at that time. I think you put it up that way. So देखिए, Pakistan has been a threat of many sorts in the sub-conventional domain, in the conventional domain. जब तक हमने brass tacks नहीं की, brass tacks एक exercise थी which became very controversial, but it gave a solid message to Pakistan that listen, if you mess with us in the conventional front, we will rip you into two halves by just turning the armored, wheeling the armored divisions westward. उसका एक इतिहास है कि Pakistan also has been brought to its present position by a great deal of military coercion and persuasion. 71 ranks as one of the greatest victories in modern history. जो डैश टू ढाका है जो सगत ने किया था और फील्ड मार्शल मैनिकशॉ वगैरह, London Times compared it with the Blitzkrieg. Sagat has been compared with Patton. तो somehow, ये हमने नहीं समझना चाहिए कि पाकिस्तान के विरुद्ध, और Pakistan has just been shall I say, a very easy thing to do, deal with. Yeah. Surgical strikes की अहमियत ये थी, and I'm not making a political point here, but we demonstrated to the world and to ourselves that these are new normals in our strategic outlook. It started with the surgical strikes, और जो Balakot में हुआ, just think of it. We went beyond POK. We went beyond POK and told Pakistan कि भाई आप टेरर वेरर की बात करोगे, we'll hit you deep. It was a big message. It has modified Pakistan's behavior that way. और जो हमने उसके बाद कैलाश में भी किया है, that is also given a message to China. Principally, I agree with you that wise nations take stock of things with honesty, and the honest matter is that China is a army, and more importantly, a strategic military framework which is powerful and needs to be dealt with accordingly. अब इसमें देखिए दो धारणाएं. Some people say no, China is fluff. It is a parade ground military. Well, if it is a parade ground military, it is social media fluff. We need not bother. But if it is not, there is a lot to bother about. Their transition to digital combat, their rocket force. मैं आपको एक देता हूँ उदाहरण. 2 weeks back, the CNC of IPACOM, जो अमेरिका का IPACOM का जो बॉस है, in a congressional hearing, he said that in a Taiwan contingency, if the PLA rocket forces open up, 90% of aircraft of the Americans and their allies will be taken out on ground. This is the mighty superpower called USA. So, China जो है does pose a threat of a different dimension. We are seized of it, but we need to do much more in terms of velocity, scale, and delivery. So, no doubt, I mean, I agree with you. We cannot be dismissive about Pakistan, but when it comes to comparative focus, it is China, and a whole lot of things need to be done, which have been discussed in the China series with Gen Shankar. देखिए, एक और चीज मैं छोटा सा ऐड करता हूँ जो जन शुक्ला ने बताया कि आप 8-9 साल पहले देखते तो पाकिस्तान वाज आवर मेन प्रॉब्लम. कश्मीर के अंदर इंसर्जेंसी था, इवन इन आवर हिंटरलैंड देयर वर प्रॉब्लम्स, एलसी गरम था, सियाचिन के ऊपर फायरिंग होता था उससे पहले, राइट. हम वी वर सीज्ड ऑफ द पाकिस्तान प्रॉब्लम, राइट. चाइना का प्रॉब्लम अभी उभरता आ रहा है मिलिट्रीली. ये जब से जी जिनपिंग आया
2012 से लेकर आप देखोगे तो चाइना के अब क्या बढ़ते जा रहे हैं। हम एक्चुअली दोनों के बीच में the entire Indian nation, not only the strategic thinking, the military thinking, everything was in a bit of a state of flux. अभी क्या है, having handled Pakistan through surgical strikes and Balakot, XYZ, and having handled China through the operations on Kailash Range और Yangtze के ऊपर जो हमने दिसंबर में किया है, we have gained strategic confidence, right? The nation has gained strategic confidence, and like what General Shukla said, our focus is very clear. We know what we have to do and what we have to get there. That is why we are doing this China challenge. We need the people on our side to understand what we are doing, right? Just follow us better, right? Okay. The next question Can on, I just say one yeah, short thing, please sir? go ahead, yeah, go ahead. माइकल पिल्सबरी ने एक किताब लिखी है, पहले भी थी आई थिंक, बट इट्स अ रिवाइज्ड एडिशन, द 100-year 100 marathon. years marathon, yeah. Please buy it today and read it. And I was amazed, sir. I was told कि उसका एक हिंदी रूपांतर भी निकला है. It is so He has popular. translated it into many, like, And it needs to be read. वो क्या कहता है कि साहब, China today has caught up with USA because it viewed it as a 100-year marathon. और ये मैराथन जैसे वेस्ट है, वो स्ट्रेटेजी लिखता है 1 2 3 4. ये जो चाइना चैलेंज है, ये यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स, कॉलेजेस, चाइना सोसाइटी में इसको ऐसे फैलाया है कि ये जो मैराथन है सबके जहन में है. So they have been waging this whole, shall we say, initiative to catch up with USA as part of this 100-year marathon, which is in everybody's view. अब अगर, so it is not whole of government, but more than government, whole of nation, whole of people, whole of nation approach. तो चाइना का जो चैलेंज है, हमको इस तरह से उसको झेलना पड़ेगा. और अगर चाइना सीरीज में 60 लोगों का व्यू होता है, then we cannot catch up. Yeah. People have to understand the China challenge. All right. Sir, I have to apologize for my comment a few days back. I was wrong. You were right. The leaders of PTI were being forced to resign by the army one by one. Oh, that's okay. Don't worry about it. Right? These things happen. Okay. I agree with what Shankar said on Jaipur dialogues. We need offensive strategy for Tibet. We need to make Tibet into a disputed territory matter. Yeah, the point is that, look, there is a legal loophole in that whole Tibet story, right? मेरा short point ये है कि China does not see, one of the things which China does is something called three warfare strategy. As part of three warfare strategy, they use something called lawfare. What is lawfare? They exploit legal loopholes to their advantage. Similarly, in the Tibet whole story, there are legal loopholes, despite the fact that हमने एक agreement MOU sign किया है. जब तक हम ये लीगल लूपहोल्स और लॉफेयर का शुरू नहीं करेंगे तो हम कहीं नहीं जाएंगे. जो whatever we can do, we must start doing. You cannot say कि हम, जैसे मैंने कल बताया कि हम एक किले के पीछे बैठेंगे और हम किले में खुश हैं. किले का दीवार तोड़ दिया जाएगा जब तक हम किले के बाहर जाके हम नहीं लड़ेंगे, right? You have to defend your fort from outside the fort, not from only inside the fort. Okay, right. I think we've overshot the whole thing. Let me see if that guy with the Telugu thing has, no, he has not translated it. Sriharsha Lokineti, I would request you to translate this, whatever is in Telugu, and send it across to me and put it in the comment. I will answer you separately on this, right? I'm sorry I'm not able to take other questions. We've overshot time by quite a bit. I think it was a great session today. We must thank General Raj Shukla for coming and putting across things to us. इतना क्लैरिटी के साथ इन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और पाकिस्तान का दृश्य इतना क्लियर बताया कि आगे क्या होने वाला है, हमें बड़ा क्लियर आइडिया है, राइट? यही बात है कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमने आज सीखा ये है
कि हमारे पास एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इंडिया के लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जो उसको हमें गंवाना नहीं चाहिए. Right? Thank you. Thanks a lot, Raj. You have any quick point? Make it or your closing comment, and then we'll say Jai Hind. Thank you very much, sir. I've said what I have to say. Thanks a lot, सबके लिए. Thank you. Good evening and Jai Hind. Good evening, sir. Jai Hind.